Welcome to the very talkative world of the speaking citizen. I am Meheru Jafar. My guest today is Kabiran, the social satirist with a schoolgirl look, who has a finger in every pie, from politics to philosophy, economics, science, films, and even Bhim Rao Ramji Ambedkar. What are you doing here, Kabiran? Should you not be in a classroom? Because Kabiran plays truant, probably that is the reason why she's taken social media by storm. And because of all the gyan that she doles out on Twitter, YouTube and Instagram viewers love her. Well, you have 8,000 followers or more now, Kabiran? Yeah, thanks for having me here. Yeah, I have about 8,000 followers on Twitter, which I don't really cared about these followers and things like that, but ho gaya. Don't say that, they'll start unliking you. No, these are very lovely people actually, and I follow many people back. And this is mainly like, I feel it's like a family sometimes. Because a lot of people say Twitter is not really a great place to be. There are trolls and there are all kinds of people and all kinds of noises and opinions. But I feel it's actually a very pleasant place if you cultivate good people around you. So a lot of people who follow me are very encouraging. The way they like things, they comment, is to see that kind of motivation. So I don't mind it at all. And of course, yeah, I'm a very small content creator at this point. So I don't know how to take that as of now. Yes. No, if you continue this way, I'm sure you'll go far because, yeah, there is something about your content which is very interesting. So my very first question to you, Kabiran, is that a few days ago, you kept insisting that, you will be back after June 4th ke baad, after June 4th. So tell me now, what is going on with you now that June 4th has come and gone? So one, I think many of us are feeling very light-hearted in general. अच्छा लग रहा है, like somebody said on Twitter, democracy का feeling आ रहा है. Suddenly a lot of people who were quiet are also talking. People in the office groups are talking. So that is very good thing to see. कि democracy का ethos बचा है and people are looking ahead at things positively. So that's amazing. And also I like what Ravish Kumar said in this context. He said that जनता ने opposition को select किया है. It's not like a sarkar that we have made a strong opposition. And for any democracy to live, survive, it's very important that people are there who believe in democracy, and people always believed in democracy in this country. It's only in the last few years that we may not be hearing such noises, but they're always around. If you go a little bit deeper into social media or real life or on the ground, you would see people are always talking about hamari to like parampara hi hai na, like my name Kabiran comes from Kabir. Though I'm an atheist, I strongly believe that, Kabir is somebody, I feel actually Kabir is also an atheist only, huh? I think so, yes. Yeah, so I thought like this, like fakiran hota hai. So मैंने सोचा कि like Kabiran is something that really truly defines me. And so when I started social media also, I thought like यही नाम रख लेते हैं Kabiran करके. तो हमारा या परंपरा ही रहा है basically of a democracy. So मुझे लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है काफी लोगों को. Ji. So, a lot is said about how the Aam Janta, 70-80% of the population doesn't really care what happens to the constitution, whether there's a democracy or a dictator, so long as they have enough to eat and work to do. So what do you think, what does democracy actually mean to you? Why is it important to safeguard the constitution? See, like you said, that it seems like a lot of people don't care about democracy and such things and constitution because they really don't have,
खाने को रोटी नहीं है टाइप्स। बट ये सिचुएशन अपने आप ऐसे नहीं बना है, ये बनाया गया है कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। ये एक सिस्टम के अंदर बनी हुई चीज है। अभी आप देखोगे कि हंगर इंडेक्स बढ़ा है, पावर्टी, दो गवर्नमेंट डेटा सेज कि इट्स ऑल फाइन एंड डूइंग वेल, एक्चुअली हम देखते हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो 80 करोड़ लोग जो जिनको अनाज मिल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचते नहीं है, वो डेमोक्रेसी के बारे में सोचते नहीं है। if you go, when you go and take that anaj from that राशन का दुकान, the kind of humiliation that you feel, it's not so easy. So जो ह्यूमन फीलिंग्स है, जो एक ह्यूमननेस है, ह्यूमन डिग्निटी है, उसके साथ ही हर आदमी जी रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। ऑफ कोर्स इट्स डिफरेंट दैट लाइक वी से दैट टू क्रिएट आर्ट यू नीड टू बी in a space where at least you have roti. That is true, but a lot of people are there, I feel, on the ground. बहुत सारे गरीब लोग हैं, आप जाके देखो, आप कुछ ऐसा रिपोर्ट जो कभी कभी जर्नलिस्ट लोग बना देते हैं, यूट्यूब जर्नलिस्ट ही सही, जो ग्राउंड पे जाते हैं लोगों से बात करते हैं, आप देखेंगे कि लोग ऐसे ऐसी बातें कह जाते हैं, इतनी अच्छी, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हमारे नेताओं के मुंह से नहीं निकलती हैं। ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि लोग डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते हैं, या 70-80% ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं यकीन रखते हैं। बहुत इक्वालिटी के साथ, बहुत प्रेम के साथ इस देश की जनता रहती आई है मोस्टली। if not for the hate fueled politics, we would have been in a much better place, and we are already, like you are from UP, you know how जो एक गंगा जमुनी तहजीब जिसे कहते हैं, how that has been carried on. तो ऐसा तो नहीं है कि डेमोक्रेसी में नहीं बिलीव करते हैं लोग। So, we've gone through, this was our 18th general election. We've gone through so many general elections in the past. But this time round, the election seems kind of different. What do you think is the difference? And what is so special about this June election? Well, बहुत ज्यादा तो मैंने सोचा नहीं इसके बारे में कि what's really different, but last time इस तरह का despair था 2019 में when they won. There was like a feeling of like despair in the air कि गया सब कुछ हाथों से गया टाइप, hopeless टाइप feeling था। अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार, because last time I was also probably not so active on social media as such, पर ग्राउंड में सोशल मूवमेंट के साथ और अलग अलग लोगों के साथ मैं काम कर रही थी। आई वॉज ऑल्सो टीचर, सो उस टीचिंग के थ्रू जो भी मैं कर सकती थी वो भी मैं कर रही थी। पर इस बार बिकॉज आई वॉज ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कोर्स, मुझे उसका एनर्जी मिला। सो लाइक when you do something you get energy from that. So this time I saw that energy personally and I got that energy. और मैंने और लोगों को भी देखा कि होपलेस फीलिंग नहीं है, डिस्पाइट अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि कुछ भी होप नहीं है, मोदी 3.0 एंड दिस एंड दैट, देयर इज अमेजिंग होप एंड इट्स बीन काइंड ऑफ रिस्टोर्ड। और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग, एक तो खुशी की लहर टाइप आप कह सकते हैं, और एक मुझे याद आ रहा है एक रील जो आपने भी शायद देखा होगा, वीमो करके एक क्रिएटर है, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि ये जो लोग सो कॉल्ड हार गए हैं ये क्यों इतना खुश हैं, जो जीत गए उनके चेहरे पे खुशी नहीं दिखाई दे रही है। मैं आपको भेजती हूँ, आप देखिएगा जरूर, वो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्लेन किया उन्होंने। Several very creative reels. One of Yes. them describing, the reason for the happiness. वो थोड़ा सा vulgar है, तलवार हाथ से गिर गई है because you have to hold on to your pants. Your pajama, yes. So that is also Yeah, exactly. hilarious, but I think maybe not polite to talk about here. But despite the hope, you're correct. You're like also mirroring my emotions. It was, एक तो इतना लंबा खिंच गया था election that, the tension became unbearable towards the end, कि क्या होगा ultimately. So yes, you're correct. Your hope is revived. Your faith in institutions like democracy are also revived. But despite that ray of hope, what do you, as a social satirist, have to say
to all those citizens of this country who still feel that they can be jailed, they can be still lynched or stripped of their citizen rights? What would you say to them? Well, I would say कि there are a couple of things that are happening. I'll try to like begin by an example. So बहुत सारे लोग जो companies वगैरह में काम करते हैं and usually हमारा एक faith होता है towards the company and this is there from like long time back कि लोग कहते हैं कि clean your Facebook profile, clean your Instagram profile. Nobody should see what you're liking, what you're doing on these profiles because it may not get you a job. It may not get you a visa. So these are like simple things to begin with. And then comes your rights to citizenship and so many other things. तो ऐसी छोटी छोटी चीजों में ही लोग इतना मतलब डर है या एहतियात बरतते हैं. सही कहा ना मैंने, एहतियात? आई होप I'm right. Sometimes I'm like so मेरा हिंदी इतना खराब हो गया है. So anyways, so लोगों में एक वो रहता है, एक डर का वो ना रहता है. लेकिन आप अगर इसको एक्चुअली में देखें तो ये एक सिस्टम की बनाई हुई चीज है क्योंकि मेजॉरिटी कहते हैं कि विंस एंड मेजॉरिटी हैज मोर पावर. बट एक कंपनी स्ट्रक्चर में और एक सिस्टम के किसी भी स्ट्रक्चर में, कंट्री के स्ट्रक्चर में भी लेटर यू वुड सी कि व्हेन पीपल हैव मोर पावर व्हाई आर द वंस टू बी स्कैर्ड. एक्चुअली वो आपके बॉस को डरना चाहिए क्योंकि आप तो 20 हो, बॉस तो एक है और आप उनके लिए काम कर रहे हो तभी उनका प्रॉफिट बन रहा है, not the other way around. If people stop working for Amazon, how is going to earn its profits? So basically मेरा कहने का ये है कि जो हम ऐसे डर का माहौल बना दिया गया है कि ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा, ये बनाई हुई चीज है, ये रियल नेचुरल चीज नहीं है. और सारा सिस्टम, every system tries to do that. Same thing with the country. And especially when you have a leader like who we have, they try to do that. It's not something natural that comes from the people or from the ground. और इसीलिए अभी हम देख रहे हैं. और लाइक एज अ वुमेन यू सेड कि जेल में जाओगे, ये होगा वो होगा. मुझे लगता है कि एज अ वुमेन आपकी तो ट्रेनिंग ही हो चुकी है जेल में जाने की. यू आर ट्रेन्ड फ्रॉम योर चाइल्डहुड कि जेल में जाओगे तो कैसे रहना है. यू नो यू हैव लिव्ड अ काइंड ऑफ अ जेल फॉर मेनी वुमेन इन दिस कंट्री. इतना प्रिविलेज नहीं रहते हैं आप. तो कोई बड़ी बात नहीं है जेल जाना. इट्स नॉट एट ऑल अ बिग डील, स्पेशली व्हेन आई सी वेरी यंग पीपल लाइक उमर, नताशा एंड एवरीबडी एल्स गोइंग टू jail, and it does not seem like a big thing, though it is horrible and Umar should be totally out now. But इसने मुझे लगता है कि मेरे अंदर एटलीस्ट जो डर था कि जेल जाने का ऐसा कुछ, वो सबको हटा दिया, सीरियसली हटा दिया. आई एम नॉट एट ऑल स्केयर टू गो टू जेल. और मैं दूसरों को भी यही कहूंगी कि आप जो चीज में बिलीव करते हो, एक ही लाइफ है भाई, आप जो चीज में बिलीव करते हो उसके लिए अगर जेल जाना पड़े या कुछ करना पड़े, इट्स ऑल राइट. इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट. अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है इस लाइफ में, आई थिंक इट्स ग्रेट अचीवमेंट. But a lot of time is wasted of many lives, if they are suddenly attacked and without even a trial, the entire families fall apart, Yeah. So it is not something one would wish for anyone, if you're a criminal, okay. But going back to this wonderful analogy you gave of the way the corporate world is structured, with one capitalist boss and then millions of people working under him. I think that single power gets strength from the fact that even though the workers are much larger in number than his board of directors, they are not united. So I Yes. think the message is for all workers, for all ordinary citizens to first unite, so that the boss cannot take advantage of the divide and rule principle. What do you have to say as a young citizen of the country? या सो यही मैं कह रही थी कि कैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डरे हुए हैं. उसका एक रीजन यही है कि आपके पास कोई यूनियनाइजेशन का तरीका नहीं है. पहले आप देखो, फिल्मों में भी देखो तो क्या होता था कि एक ट्रेड यूनियन होता था,
है ना, उसमें लाइक अमिताभ बच्चन टाइप फिल्मों में, 70s का फिल्मों में, एंड देन हीरो यूज्ड टू बी सम लोअर मिडिल क्लास वर्किंग क्लास पर्सन बेसिकली, एंड दे यूज्ड टू फाइट फॉर दैट, और जो विलन होता था वो कैपिटलिस्ट होता था। पर अभी आप देखोगे तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, आइदर द हीरो हीरोइन एवरीबडी इज लाइक सो रिच, दे आर ट्रैवलिंग इन व्हाटएवर दे फील लाइक एंड लिविंग इन लाइक बिग पैलेस काइंड ऑफ प्लेसेस, मतलब कोई नॉर्मल वो है ही नहीं। तो सोसाइटी में भी एक वो जाता है कि अच्छा ये तो अलग दुनिया है और हमारा अलग दुनिया है। तो जो मैं कह रही थी कि लाइक सिस्टम एक अपने आप इस तरह से मतलब बनाया गया है, एक जो कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट के अंदर इतना भय है, जैसे कि हम कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर, व्हाई एवरीबody वांट्स सरकारी जॉब्स, बिकॉज उसमें इतना अकाउंटेबिलिटी का आपको लगता है कि इट्स लिटिल लेस, यू कांट बी थ्रोन आउट जस्ट लाइक दैट, बट इन अ कॉर्पोरेट प्लेस you see that you speak about something or you air your opinion and you can be thrown out, and that scare is always there on your head, despite you can be the great whatever, you can be thrown out। लेकिन सरकारी जॉब्स में ऐसा नहीं होता है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर सरकारी जॉब्स। सो दैट इटसेल्फ विल टेल यू दैट कि ये सिस्टम जैसे बना है उसके अंदर पीपल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, पर वो जो कॉर्पोरेट से जो डर है वो गायब करना है। मतलब अभी दिस इज द राइट टाइम आई फील टू यूनियनाइज। इनफैक्ट आईटी में भी यूनियंस बनना शुरू हो गया है। A lot of my friends are working with KITU, which is Karnataka IT Union. So yeah, so like people are understanding the importance of unionizing. So Gee. What would you say, to thousands, if not millions of youngsters who are, who want government jobs, who are angry about the recruitment into the army having been cut down, no jobs in the railways anymore. What would you like to say to them so that their anger is reduced? Do you have an alternative to the kind of jobs they're looking for and wanting from the government? See, I would not say that reduce your anger. I would say by all means have your anger, because anger is the most necessary thing, before you actually take an action. You need to be angry inside. I am angry. I think a lot of people are angry. ये anger ही था पूरी जनता का, जिसने अभी जो रिजल्ट आया है उसमें एक anger has played its own role। तो एंगर तो आप अपना छोड़िए मत, जो एंगर है उसको अंडरस्टैंड करिए क्या चीजों पे है। एक तो ये, दूसरा ये कि इन आवर कंट्री देयर आर वेरी लेस सरकारी जॉब्स एज सच, इट्स लाइक आई गेस 3% और समथिंग आर गवर्नमेंट जॉब्स ऑल टुगेदर इन द कंट्री। एंड इफ यू कंपेयर विद places like even China has about 20-24% government jobs, and in fact even their public sector companies are in top 10 in the world in terms of profits and revenue. I think 3 of them are Chinese companies in top 5. So I don't recall exactly, we can cross check. So what I'm saying is कि एक तो already सरकारी जॉब बहुत कम है, सरकारी जॉब ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होने से एक नॉट जस्ट लाइक कि इकोनॉमी में पैसा आता है, लोगों को एक ठीक ठाक करियर मिलता है एंड ऑल दैट, इससे ये भी होता है कि आपकी ओवरऑल इकोनॉमी भी थोड़ी रिवाइव होती है। ये भी एक देखने वाली बात है। और बहुत सारे जो आप स्कीम्स चलाना चाहते हैं वो आप ढंग से चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स में एक होता है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स होते हैं। सो दीज आर अपार्ट फ्रॉम द बैंकिंग एम्प्लॉयज इन ऑल द बैंक्स। तो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट का काम है गांव गांव जाके, अलग अलग जगहों पे जाके जो बैंक की फैसिलिटीज है उनको उपलब्ध कराना। एंड देयर आर lakhs of banking correspondents who are out there. So if those could be made government jobs, if those people could be made permanent themselves, उसी से बहुत impact पड़ जाएगा banks पे। Same thing with the other offices and other companies that we have. So if the government really wants, if the policymakers really want, they can do this. It's not a big deal to increase the number of government jobs. Like railway vacancies are left. We have heard so much about them. We have heard about paper leaks in other jobs. So all these things are happening. These are a systematic failure. These are not something God ordained sort of thing.
ये हो रहा है क्योंकि What do you say to a government when it says, you citizens don't expect the government to give you everything, like good roads, good job, good education. You have to uh, find all these goodies on your own. What do you say to that? फिर मतलब this is like, what is the point of having a government? If you really understand government, governance, and citizenship, and a country, and a model of a country, what's the point of having a government if they can't give you all these things? What are they for? Are they just like dealers between capitalist and natural resources of a country? You know, that's the job they seems to be doing, instead of, actually doing things for the citizens. So, going back to your mention of Amitabh Bachchan films, you are also a film buff. You love to review films. So, what does your filmy love uh, say about the kind of the film that best reflects the country today? Can you name Abhi to, a film made in recent times? I would say now that it's like, if I have to make a video now, I would say Hum Do Hamare Do is happening right now. Yeah. So earlier it was like Ek Akela. Yeah. Now it's Hum Do Hamare Do sort of film going on. So if somebody knew nothing about India, knew nothing about the country, and their first lesson was a film like Hum Do Hamare Do, well, what do you think they would feel about India if their knowledge of the country was only that one film? Arey, this is like a nakli film that I just made up. Hum Do Oh, Hamare Do is not really a film. no, but what about that Anu Kapoor film, which is making, with I don't know about that. I was just joking about, like Hum Do these guys, and then Hamare Do, the new coalition partners coming in. So okay. I went that way. Okay, because there's some film, in the same genre as Kerala Files, and I see the propaganda movies. Yeah. yes. All So right. I don't know much about it. It's just that I feel sorry that somebody like Anu Kapoor, who's so talented, is associated with a film that has perhaps potential to damage our social fabric. Anyway, so tell me, what kind of a film do you dream of making, watching, or reviewing in days to come? So my filmy review is definitely inspired from films, because I thought like films is a language that everybody speaks in the country. It's a language that everybody knows and understands. Like the dialogues, the songs are very common to all of us. So it's just a medium, it's a format that I took. But if I have to like make a film, review a film, what I'm actually doing here is looking at film is a medium for me. It's not my only way. It's a medium through which I craft the entire thing that I want to actually say. And what I actually want to say is the political scenario happening in the country, the political, economical, and all the other kinds of things happening in the country. That's my wish and fancy. But if you say like, if I were to make an actual film, at this moment, I can't really say what it's going to be. I actually I write, so I'm writing a book. It's a dystopian novel, so maybe something on those lines. But right now, I'm interested in like writing more than filming, making. But these reviews will keep happening, because these reviews are not really about films. Thankfully, they are more about what's actually happening in the country. So what do you think is actually happening in the country today, and how are you feeling about what is happening? Is it गर्मी आपको ज्यादा लग रही है, या सर्दी ज्यादा लग रही है? क्या कैफियत है आपकी इस समय? अभी तो मुझे लग रहा है कि बारिशों का मौसम है. थिंग्स आर चेंजिंग. जैसे बारिश आती है और गर्मी शांत हो जाती है, जमीन से नई नई
चीजें उगने लगती हैं, नए नए पौधे आने लगते हैं, नए पत्ते आने लगते हैं, सब हरा हरा हो जाता है। तो मुझे लगता है अभी तो ऐसा टाइम है, इट्स अ टाइम टू ग्रो। सब चीजें लाइक जैसे जिस तरह बारिश में ग्रो होती है ना, उस तरह का मुझे लगता है कि कंट्री में भी उस तरह की चीजें चल रही हैं। एंड इट्स लाइक रियली इंटरेस्टिंग दैट हाउ दीज टू थिंग्स आर हैपनिंग ऑलमोस्ट टुगेदर, that you see मौसम changing a bit. Of course, not so much because there's like still too much heat in Delhi and every other place. पर हाँ, थोड़ा तो बदल रहा है, एक दो बारिशें आई हैं तो बारिश जैसा फील हो रहा है मुझे। Wonderful. So on that lovely note, in the hope that more rainfall we will get to see, which will hopefully wash away a lot of rubbish we have experienced in the past. And wish you all the best. And you youngsters like you are now, the future custodians of this beautiful country. And hope you realize your responsibility. Thank you, Kabiran, for talking to the citizen.